So very good evening, learners. Today we are going to start with our next unit. That is marketing mix. We are going to discuss about. Now, what is marketing mix? Marketing mix is nothing but a foundational concept that you have in the marketing. Okay. It is a framework that in the business that is used to promote the position of their products, services that they have in the market. मतलब ये एक सेट ऑफ कंट्रोलेबल टूल है जो कंपनी यूज करती है अपने रिस्पॉन्सेस को टारगेट मार्केट में प्रोड्यूस करने के लिए. Now there are 4 P's traditionally that we had in the marketing mix: product, price, place and promotion. अब प्रोडक्ट क्या होता है? Product, student, is nothing but the item, the services that you offer, right? Ensuring that it meets the need of the customer. It stand out in the market. What is price? The right pricing strategy, जो value होती है product की, so that you can balance the profitability with the customer willingness to pay. Place, किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को, लोकेशन को, जहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल है वो मेक श्योर करोगे कि कस्टमर्स को इजीली एक्सेस हो जाए. देन वी हैव प्रमोशन. Promotion, it means all the communication, marketing efforts that is used to inform, to persuade, to remind customer about the product, which involves what? Advertising, social media, and even the sales promotion. Okay. So together, when this 4 element comes, it creates students a comprehensive plan of marketing product, enabling the business so that they can achieve their goals, address the needs of their audience. Okay. But in the modern market, we have added some more additional factors apart from this 4 P's, like people, process, and physical evidence. Okay, which ensures it enhances the business ability to meet the customer expectation, foster the long-term relationship also. Okay. Now, we'll discuss this element more in detail, one by one. The first one is your product, which involves decision about the goods, the services that are offered by a company. अब प्रोडक्ट में क्या क्या होगा? उसका डिजाइन आएगा, फीचर्स आएंगे, क्वालिटी आएंगे, पैकेजिंग आएगा, ब्रांडिंग आएगा. ओके. नाउ द मेन गोल ओवर हियर is to develop the product that meets the needs and the want of the target market. Price, how much customers are willing to pay for that product. अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि राइट प्राइस जब आप सेटअप करोगे तो वेरियस फैक्टर्स को कंसिडर करोगे. दैट इज द कॉस्ट, द कॉम्पिटिटर्स प्राइस, ओके, टारगेट ऑडियंस का बजट. Then comes the place. Now, place is the distribution channel, location where the product is available. It includes what? The decision about the retail locations, their online process, supply chain, logistic. So it ensures that the product reaches the right customer at the right place and the right time. Then comes promotion, which encompasses students, the various ways, how are you going to communicate to the customer about that product. कैसे आप प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर तक पहुंचाओगे.
एडवर्टाइजिंग करेंगे हम यहाँ पे, सेल्स प्रमोशन करोगे, सोशल मीडिया यूज करोगे. ओके. Now, after the elements, we are going to talk about the 4 C's of marketing mix. वो क्या थे? 4 P's, जो P से स्टार्ट होती थी. अब हमारे पास है 4 C's ऑल्सो. अब 4 C's में सबसे पहले जो है, दैट इज कस्टमर नीड एंड वांट. नाउ, customer need and want. Okay. Focus on the understanding, meeting the needs, wants, and problem of the target customer, which aligns with the product students. Okay. What product can give, what product can we make? Okay. The question becomes, what does the customer need? मतलब आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सोच के प्रोडक्ट को बनाना है. ऐसा ही कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो कस्टमर्स से कोई लेना देना ही ना हो उसका. ओके. कॉस्ट टू द कस्टमर. Now, this replaces what? The price, by emphasizing the total cost of the ownership that you have from the customer's perspective. Okay, it includes what? The not only the price, but also the time, the effort that you have, and the inconvenience that is involved in purchasing and using that particular product. Clear? Okay. Then comes the convenience. अब convenience मतलब क्या होता है? The substitute जो अलग अलग प्लेस पे अवेलेबल होंगे, right? How easy it is for the customer to get that product available, okay? To buy that product, okay? So here, instead of merely promoting that product, focus on building the relationship with the customer, listening to the customer feedback. Understand how are you going to make that product available to that customer. Then comes communication, जिसको रिप्लेस किया गया है प्रमोशन के साथ. इसका मतलब होता है एंगेज करना कस्टमर के साथ. इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रमोटिंग, उनसे ये समझ लो कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है प्रोडक्ट को यूज करने में, कुछ चेंजेस चाहिए, उनके फीडबैक्स ले लो, फीडबैक को इम्प्लीमेंट करना. दैट इज कम्युनिकेशन. ओके. एनी डाउट स्टिल नाउ? Next, we are going to discuss about is the product management. See, the word में ही उसका मीनिंग है. प्रोडक्ट को किस तरह से आप मैनेज करोगे थ्रू इट्स लाइफ साइकिल. दैट इज फ्रॉम, जैसे प्रोडक्ट डेवलप करोगे वहां, मतलब प्रोडक्ट का जो आइडिया आएगा वहां से लेके डेवलपमेंट तक. दैट इज लॉन्च, ग्रोथ, एंड देन डिसकंटिन्यूएशन आल्सो कम्स. So product management is a process where you understand how are you guiding a product throughout its lifestyle. Okay. So here it aligns students with the, you can say, market that you have, you are dealing with. Here the product managers are responsible for making the decision with regards to pricing, their features, positioning. Okay. Collaborating with the cross-functional teams also, like marketing team, engineering team, customer service team that we have. Now, what are the responsibilities that you have in the product management? The first responsibility is product strategy. अब प्रोडक्ट मैनेजर क्या करेगा? डिफाइन करेगा प्रोडक्ट के ओवरऑल विजन क्या है, लॉन्ग टर्म रोड मैप क्या है, जहां पे वो क्लियर ऑब्जेक्टिव सेटअप करेगा, आइडेंटिफाई करेगा टारगेट मार्केट्स क्या है, determine how the product will meet that market needs, कॉम्पिटिटर से यूनिक कैसा हो सकता है हमारा प्रोडक्ट.
Okay. So they create a plan, students, that aligns, okay, with the product goal, with the business strategic objectives. Let's say, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. Let's say a product manager है in a tech company. They might decide that the next generation of the smartphone will focus on improving the battery quality life based on the customer feedback. तो अब इनसे वो क्या करेंगे, एक रोड मैप बनाएंगे, गाइड करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, ताकि नेक्स्ट 2 इयर्स में जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट वैसे आप प्रोडक्ट बना सको. ओके. देन कम्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर्स विल क्लोजली मॉनिटर विद द इंजीनियरिंग टीम, विद द डिजाइनिंग टीम, विद द डेवलपमेंट टीम to bring that product vision to life. Now, this ensures what? That the features are designed, implemented as planned, okay, while managing the development process. Again, let's say एक software company है. अब वहां पे product manager will oversee the development of new mobile app. They ensure that the app features like user-friendly navigation, secure payment options are built according to the vision, coordinating with the developers so that they can meet the deadline. Next is market research. Obviously, understanding the customer needs, market trend, competitor offering is very important. So product managers needs to conduct the research, gather the data, all the available information using the surveys, the interviews, even the market research or market analysis. अब इससे क्या होगा, उनको ये जानकारी लेने में आसानी होगी कि कस्टमर क्या प्रोडक्ट देख रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अ प्रोडक्ट मैनेजर फॉर अ फिटनेस इक्विपमेंट कंपनी will analyze the customer feedback and the market trend. What does the customer wants? Customer wants more compact, space saving design. So इससे वो क्या करेंगे, अपनी टीम को बताएंगे ताकि उनकी डेवलपमेंट टीम ऐसे प्रोडक्ट बना सके फिटनेस के विच इज मॉड्यूलर, फोल्डेबल. फाइन. Then comes your product launch. Now the product launch is responsible for planning, executing a product market introduction. Now they will collaborate with the marketing team, sales team, distribution team also. For example, again, सेम यहाँ पे हर एक में एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको इजीली समझ जाए. अब प्रोडक्ट मैनेजर ई कॉमर्स सेक्टर में है, उनको एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, न्यू ऑनलाइन शॉपिंग फीचर. So they will work with the marketing team to create that buzz on the social media, set up promotional offers so that early users are attracted, ensure that the website is ready to handle the traffic on the launch day, because जिस दिन आपका प्रोडक्ट लॉन्च होता है बहुत से कस्टमर्स विजिट करते हैं, तो वो जो ट्रैफिक होती है वेबसाइट पे, सम टाइम उसके वजह से वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो वो हैंडल करना भी आना चाहिए आईटी टीम को. Performance and feedback. After the product is launched, the product manager will continuously monitor its performance using the metrics like sales number, customer satisfaction. Because अगर कोई improvement चाहिए तो accordingly वो implement कर सकते हैं, right? Cross-functional collaboration. Product manager will act as a point of contact between various teams that you have, like engineering, design, marketing, sales, customer service. Now they ensure students that all the teams are aligned with the product goals. They work together to achieve a common objective. Okay. So here a product manager for a consumer electronic might coordinate between the design team, engineering team, marketing team also, to ensure that there is a cohesive product launch.
Life cycle management. Managing the entire life cycle from the initial concept to the product to the launching, growth, maturity, and then eventually decline also. So product managers decide when to particularly launch the new product, new features. Okay. For example, product manager has a software company. Okay. They decide to discontinue older version of software after launching a more advanced version. So what they will do, they will coordinate with the sales, customer support so that this transition from old to new, you can say update goes on smoothly. Then comes pricing and profitability. Determining the right price strategy is crucial to ensure that the product is profitable. So product manager को क्या करना होगा, analyze करना होगा cost, customer willingness to pay, competitor pricing क्या है ताकि वो best approach दे सके market में. Okay, so here the product manager will decide about the subscription pricing model example. Okay, so they will introduce a basic free version. अगर वो free version पसंद आया तो automatically customer used to हो जाएंगे, तो फिर वो एक प्रीमियम प्लान निकालेंगे, स्मॉल बेस प्लान निकालेंगे. And last comes your risk management, where product managers identify what are the potential risk, such as technical risk, market changes. Okay, clear? Any doubts? Any doubts, learners? Yes, no? Okay, fine. Thank you, Madhumita. Thank you, Renu. Next, we are going to discuss about is the level of product. Now, we have different level of product, students. The first is your core product. Core matlab, which represents your fundamental benefit or value that you have in buying that product by the customer. For a smartphone, core product क्या होगा? Ability to communicate with the others, access the internet, stay connected. Actual product क्या होगा? जो आपका physical product है, जिसके डिजाइन होंगे, फीचर्स होगा, पैकेजिंग होगा, क्वालिटी होगा. Okay, actual product is what the customer can see. Fine. So in case of smartphone, the actual product includes what? Phone design, screen size, battery life, camera quality, operating system उनका जो आप देख सकते हो ओपन करने के बाद. Then comes augmented product. Now, augmented product includes what, students? All the additional benefits that come with that product. Okay. For example, the augmented product for a smartphone is what? The warranty, customer support, okay, software update. Fine. So let's take one more example. Let's say you are buying a car. Okay. So the core product is what? The basic need for transportation and mobility. इसलिए आप कार बाय कर रहे हो. अब कार बाय करोगे तो जो मॉडल आप खरीदोगे, मारुति या whatever it may be, that is what your actual product. And augmented is what? उसके साथ आपने एक्स्ट्रा वारंटी ले ली, रोड साइड असिस्टेंस ले लिया, फ्री मेंटेनेंस ले लिया फॉर अ ईयर. ओके, so this levels of product help the business not only to understand what they are offering, but also find out the ways how they can do a value proposition, differentiate their offerings in the competitive market. Okay.
प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, अब अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में डील भी करते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट इज योर कंज्यूमर प्रोडक्ट. Now, these are the product students which are consumed by the final consumer for personal use. जिनके अंदर कन्वीनियंस प्रोडक्ट आएगा. कन्वीनियंस मतलब जो कस्टमर्स बार बार खरीदेंगे, इमीडिएटली खरीदेंगे. दे आर ऑफन लो प्राइस एंड वाइडली अवेलेबल. जैसे कि आपका टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, न्यूज़पेपर हो गया. ठीक है. देन कम्स शॉपिंग प्रोडक्ट्स. These are these are the products that consumer buy very less frequently. They compare the quality, the price, the style. So consumer invest more time, effort. Okay, अगर आपको क्लोथ्स खरीदने हैं, आप दो तीन जगह पे देखोगे, फिर खरीदोगे. फर्नीचर खरीदना है तो पहले आप दो तीन स्टोर्स में जाओगे, फिर खरीदोगे. सेम विद द होम अप्लायंसेस, सेम विद द इलेक्ट्रॉनिक्स. सो दैट इज व्हाट शॉपिंग प्रोडक्ट्स. Then comes specialty products, unique products that have specific brand preferences. Customers are willing to make special purchasing effort to buy that which has high cost. Lamborghini, luxury car जो है, that is what specialty product. High end electronics हो गए, professional cameras हो गए. Okay. Then comes unsought product, which consumers do not actively seek or think of buying. जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस बहुत से लोग इग्नोर करते हैं. इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज, फ्यूनरल सर्विसेज. ओके. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. देन वी हैव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ऑगमेंटेड. ओके. Let me first complete this, then okay, fine. Let me complete this. See, augmented मतलब आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, उसके उसके साथ आप जो एक्स्ट्रा फीचर्स और खरीदोगे, ठीक है, दैट इज ऑगमेंटेड. कॉम्प्लीमेंट्री टाइप बोलते हो ना, एक्स्ट्रा चीजें मुझे खरीदनी है, मुझे प्रोडक्ट को हार्म होने से बचाने के लिए. अगर आपने एक लैपटॉप लिया, ठीक है, लैपटॉप के साथ आपने 2 years की वारंटी भी ले ली. So what is that 2 years extra warranty to take a prevention? So that is augmented. Now clear? Sanjay Laha. कोर मतलब क्यों खरीद रहे हो, क्या सोच से आप खरीद रहे हो. अगर आपको घर खरीदना है तो क्यों खरीदना है, वहां पे रहने के लिए. सो दैट इज योर कोर, मतलब इनिशियल आइडिया जो दिमाग में आएगा. एक्चुअल मतलब आप जब घर खरीद के उसके अंदर रहने जा रहे हो, दैट इज योर एक्चुअल प्रोडक्ट. फिर उसके अंदर आपने जो रिपेयरिंग्स कराई, रेनोवेशंस कराया, दैट इज ऑगमेंटेड. ठीक है. नाउ क्लियर एवरीबॉडी. यस. ओके, थैंक यू. सैयद मोहम्मद, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन. ओके. सी, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि व्हाट आई कैन गिव यू अ सिंपल एग्जांपल ओवर योर. लेट्स, ठीक है, एक कंज्यूमर है, ठीक है, जो एक प्रोडक्ट मैनेजर है, लेट्स से, जो हर डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है. जैसे कि अगर आपको एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट टीम से लेना देना नहीं है. वो प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त आपको ये भी देखना होगा उसका ब्रांडिंग अच्छे से हो, उसकी डिजाइनिंग अच्छे से हो, कहीं से डैमेज ना हो प्रोडक्ट. राइट, पहला तो वो. सेकेंडली आपको ये देखना है कि उसकी प्राइसिंग अच्छी है, तो प्राइसिंग टीम के साथ आप बैठोगे. फिर आप ये भी देखोगे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो रहा है मार्केट में. राइट. तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्रॉस फंक्शनल मतलब हर टीम इन्वॉल्व हो जाएगी. वेदर इट इज ABC, इट डजंट मैटर, बट एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद वेरियस टीम्स. नाउ क्लियर. ओके.
नेक्स्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, जहां पे हमारे पास है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. Now, industrial products are those which are purchased by the business organizations for using in the production operations. ठीक है, जैसे कि मटेरियल्स हो गया, पार्ट्स हो गया. अब मटेरियल एंड पार्ट्स मतलब रॉ मटेरियल जो आप खरीदते हो, राइट. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए स्टील हो गया, ऑटोमोबाइल्स के लिए टायर्स हो गए, राइट. देन कम्स कैपिटल आइटम, जो लॉन्ग लास्टिंग होंगे लर्नर्स, which is used for production operations. Now this include what? Building, machinery, equipment. Okay. Then comes supplies and services, which are short term items consumed during that production only. जैसे कि lubricants हो गया, ऑयलिंग हो गया, क्लीनिंग सर्विसेज हो गया. ओके. नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इज ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल. अब ड्यूरेबल का मतलब होता है विच इज लास्टिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, which are used over a period of time, like your appliances, furniture, car. Okay. Non durable में आ गया which has to be consumed quickly, जैसे कि आपके फूड आइटम्स हो गए, फ्यूल हो गया. ओके. क्लियर एवरीबॉडी with the product classification? Okay, fine. Next we are going to discuss about is the product planning. अब प्रोडक्ट प्लानिंग कैसे करो? फर्स्ट, प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है? स्ट्रैटेजी बनाना, डेवलप करना, मैनेज करना प्रोडक्ट को थ्रू आउट इट्स लाइफ स्टाइल फ्रॉम द कंसेप्शन टू द रिटायरमेंट फेज. अब इसमें आप क्या क्या चीजें देखते हैं? फर्स्ट, यू विल आइडेंटिफाई द मार्केट नीड्स. मतलब आप ये देखोगे, the first step you can say is to understand, do a product planning, identify the unmet needs, opportunities that are there in the market, understanding the customer points, market trend, competitor की offerings क्या है. ठीक है. Setting product goals and objectives. Now the product goals are established so that you can guide the development process, align the product with overall business strategies. Okay. So this goal, students, could be related to that profitability. For example, a company ने goal set किया to capture 10% of the market share in the premium smartphone segment. So that is what? By capturing the AI areas, 5G connectivities. Defining product features. After identifying the market needs, you will define किस तरह के प्रोडक्ट को आपको लॉन्च करना है, उसकी फंक्शंस क्या होंगे, डिजाइन क्या होंगे, क्वालिटी क्या होगी. ओके. क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट रोड मैप. दैट मीन्स अ प्रोडक्ट को आउटलाइन करना, मतलब किस तरह से आप प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, किस तरह से मार्केट में लॉन्च करोगे. Developing go to the market strategy. Now this involves how the product will be introduced to the market. जहाँ पे आप प्राइसिंग डिसाइड करोगे, प्रमोशन कौन कौन से यूज करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होंगे. ओके. मैनेजिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. दैट मीन्स योर प्रोडक्ट प्लानिंग डजंट एंड आफ्टर द लॉन्च. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, इट इज कंटिन्यूसली मैनेजिंग द प्रोडक्ट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, दैट इज ग्रोथ टू मैच्योरिटी, इवेंचुअली टू द डिक्लाइन एज वेल. सो प्रोडक्ट मैनेजर को डिसाइड करना होगा व्हेन टू इंट्रोड्यूस न्यू अपडेट, व्हेन टू पाइवोट द स्ट्रेटजीज, व्हेन टू डिसकंटिन्यू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड ब्रिंग द न्यू वन. Budgeting and resource allocation. Now, effective product planning requires what? Allocating the resources, financial, human, technological, effectively. Okay.
So this involves what student creating a budget for the product, that is in marketing, their operational cost, अलग अलग जगह का budget आपको decide करना होगा. And then comes the customer feedback and continuous improvement. Product तो launch कर लिया, but customer से feedback भी लो कि product कैसा है, right? Regular updates, improvement based on the user experiences. Fine. Somebody had a doubt on durable and non durable. देखो durable का मतलब होता है आप long time use कर सकते हो, जैसे कि जो चीज जल्दी खराब नहीं होती, vehicles हो गया, equipment हो गया. Non durable means which cannot be stored for a longer period of time, जैसे कि आपके food items हो गए, right? Fuel हो गया. Fine. Now clear, Madhumita? Okay, thank you. Somebody also had a doubt on responsibilities of product management or manager. सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले तो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी आ जाती है. प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी मतलब आपको एक सोच बनानी है कि किस तरह से मुझे प्रोडक्ट को मार्केट में ले आना है, उसमें क्या क्या चीजों की डेवलपमेंट होगी. अब ये सब चीजें जब डेवलप करोगे तो ऑब्वियसली आपको मार्केट में देखना होगा आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, दैट इज योर मार्केट रिसर्च. देन यू विल लॉन्च दैट प्रोडक्ट, and for launching after that product you will see how that product is performing, correct? एंड जब परफॉर्म कर रहा होगा प्रोडक्ट, आपको कंटिन्यूसली ये भी रखना होगा कि वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. कुछ चेंजेस रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट में तो वो आपको करनी होंगे, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग विद द डिफरेंट टीम्स. एंड प्रोडक्ट अगर पीक पे पहुंच जाता है तो डिक्लाइन भी आएगा, तो उस टाइम पे आपको क्या इंप्रूवमेंट्स करने होंगे, क्या अपडेट्स लेने होंगे प्रोडक्ट, and whatever risks are involved, you need to take care of that also. Clear, Tanmoy Datta? Okay. Next, we are going to discuss about is the product life cycle. अब product life cycle क्या होता है? It's a stage of the product. सी देखो, जब आप स्टार्ट करते हो प्रोडक्ट को तब इंट्रो में होता है, जस्ट इनिशियल फेज में होता है. फिर उसके बाद थोड़ा ग्रोथ होगा, फिर मेच्योरिटी आ जाएगी एक लेवल जब आपके पास इतने कस्टमर्स हैं. बट उसके बाद कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा या कस्टमर वही प्रोडक्ट यूज करके बोर हो जाएंगे, तब डिक्लाइन फेज आ जाएगा. Okay, so a product life cycle is a framework that is used to describe the stages that a product goes through its inception. Fine. So the first stage is introduction stage. Now, this is the stage, student, where a new product is launched into the market. Fine. So the focus over here is to build the awareness, attract the customers. So sales growth starting में slow होगा because आप newly launch हुए हो market में. Profits are sometime negative also because अभी तो आपको market capture करना है. So इस दौरान आपका advertising cost ज्यादा होगा, research and development पे cost ज्यादा होगा because अभी आप new हो in the market. Then comes growth stage. Now, growth stage is where the product gains more market acceptance. Sales are increasing, so profit begin to rise, students, over here. Fine. So competitors may enter the market at this stage. For example, smartphone saw a growth in the year 2010, right? Where more customers adopted the technology and the new competitors came into the market like Apple and Samsung. After that comes your maturity phase. अब maturity मतलब आपका सेल्स एक पीक पे चला गया है, ठीक है. अब जब ग्रोथ रेट जो होगा ना वो स्लो डाउन हो जाएगा एज द मार्केट गेट सैचुरेटेड. अगर आप एक ही चीज कस्टमर्स को सेल करोगे तो वो भी तो बोर हो जाएंगे, राइट? बिकॉज देयर आर डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स हु आर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स. So profit margin at this stage start declining due to increased competition. For example, soft drinks like Coca-Cola, Pepsi are in the majority state.
as the market for carbonated beverages is fully developed by the new entrants. प्लस कस्टमर्स को शुगर फ्री चाहिए बहुत कुछ अभी, दे आर हेल्थ कॉन्शियस, सो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को रिज्यूमिनेट किया, शुगर फ्री ड्रिंक्स भी निकालनी स्टार्ट कर दी, करेक्ट. एंड देन कम्स योर डिक्लाइन स्टेज, दैट इज the decrease of the sales happen over here. It could be due to the customer preferences, technological advancement. Okay, so your profit will shrink down. So customer could sorry, your profit will sink down. So companies had to decide कि उनको प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है या फिर कुछ अपडेशन लाना है प्रोडक्ट्स में. ओके, क्लियर, फाइन. सो इसका एक इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कि डीवीडीज जो हम पहले यूज करते थे उसका डिक्लाइन स्टेज आ गया, बिकॉज आज सब लोग क्या यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, राइट, amazon यूज करते हो, राइट. वाई, व्हाट इज दिस, दिस इज न्यू टेक्नोलॉजी. तो जब एक न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाएगी, कॉम्पिटिटर आ जाएगा आपका, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, क्लियर एवरीबॉडी. ओके, नाउ अभी आप जब न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे तो क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, व्हाट इज द प्रोसेस. द फर्स्ट इज, सबसे पहले अगर आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो उसका आइडिया जनरेट करना होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कमिंग अप विद सम न्यू इनोवेटिव आइडियाज, राइट. देन कम्स आइडिया स्क्रीनिंग. अब आइडिया स्क्रीनिंग क्या होता है, आप इवोल्यूएट करोगे कौन सा फिजिबल है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, मार्केट पोटेंशियल देखोगे, टेक्निकल फिजिबिलिटी देखोगे. ओके, उसके बाद कंसेप्ट को डेवलप करोगे एंड टेस्ट करोगे. आप एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाओगे, उसको मार्केट में टारगेट एरियाज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कस्टमर्स के रिएक्शन जानोगे. देखो कभी कभी आपके घर ना कोई सेल्समैन आते होंगे, बोलते होंगे एक सैंपल है इसको यूज करिएगा. जब आपको वो सैंपल दे रहे हैं, दैट इज व्हाट, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. अगर आपको पसंद आया तो मार्केट में जाके वो आप खरीदोगे, राइट. Then comes business analysis. So this stage involves evaluating the business potential of that product concept. It includes the sales forecast, कितना cost होगा, profit कितनी हो सकती है, मतलब business से related, monetary related हर एक चीज. एंड देन उसके बाद आप प्रोडक्ट को डेवलप करोगे. आपने एक सैंपल तो डेवलप किया था, उस तब तक आपने इसको मार्केट में लॉन्च भी किया छोटे से टेस्टिंग के हिसाब से. उसके बाद आपने एनालाइज किया मुझे इतना खर्चा आएगा, कस्टमर्स का फीडबैक वाज सैटिस्फैक्टरी, देन यू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट एंड देन इट केम्स द मार्केट टेस्टिंग. मार्केट में प्रोडक्ट तो डेवलप हो गया, बट आपको जानकारी भी रखनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट. सो यू हैव टू टेक कंटिन्यूस फीडबैक एज वेल, लर्नर्स, फाइन. एंड लास्ट कम्स योर कॉमर्शियलाइजेशन. That means this is your final stage, which is that customers are satisfied, everything is going on smoothly in the market. Clear, everybody? Yes, no? ओके, कॉमर्शलाइजेशन. सी, कॉमर्शलाइजेशन का होता है मॉनिटरी. आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में, वेदर इट इज प्रॉपर, द टाइमिंग ऑफ लॉन्चिंग इज प्रॉपर, जोग्राफिकल लोकेशन आपने जो लॉन्च किया है वो प्रॉपर है कि नहीं, प्रमोशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो रहा है कि. ओके, fine. Now let's do one quick question answer session to understand how much we have. 1 minute. I think this is something different. Okay, just hold on. No, I think this was of the previous unit, so we can ignore this. Okay.
Tick. So, any doubts, any questions? Who can tell me what are the 4 phases of the product? Life cycle क्या है? 4 phases क्या है? Who can tell me? अभी पढ़ा था हमने भी. Yes. 4 phases लाइफ साइकिल के प्रोडक्ट लॉन्च होने के क्या क्या है? क्विकली. वेरी इजी. सुपर सुपर. नो 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 नो. Very good, Anjali. That is intro, growth, maturity, and decline. Very good, Trupali. Very good, Mamta. Super. And Sachin, stop all that nonsense thing in the class. Don't distract the class, okay? Otherwise, get out of that class. Intro, growth, maturity, and decline. Super. Riya, I think. Sanjay Laha, great. I think everybody is remembering that. Super, great. I'm very happy. See, ये जो answer है, it is important learner, product life cycle. Also, this answer is important, new product development process. मतलब कभी भी new product को develop करोगे तो उसका process क्या होगा? Okay? Sachin, every class I have to scold you or what? Every class you distract by putting something or the other in the chat box. If you don't want to attend the session, don't attend it. But don't distract me in the sessions. Fine. So, any doubts, any queries, learners that you all have for today's session? Anybody? Understanding everybody. See, जहाँ तक हो सके, we are taking a simple example so that you can relate it with your normal day-to-day life and you can write it easily. Okay? In your own simple words. Okay, unsout. Okay, I'll explain what is unsout. See, unsout का मतलब होता है कहाँ पे अनसाउट जो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन है. अनसाउट का मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें जो कस्टमर की जरूरत की नहीं है, जिनको एक्टिवली बाय करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो सोचते हैं कि बाय करना भी जरूरी है. सो इट रिक्वायर्स एग्रेसिव प्रमोशन. सी देखो, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है तो लोग आपको बताएंगे कि क्यों लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है, तो ही आप खरीदोगे. पहले के लोग ये सब चीजें नहीं खरीदते थे, राइट? वाई? बिकॉज दे थिंक वाई टू इन्वेस्ट मनी इन ऑल सच थिंग्स. तो ये सब चीजें विच इज नॉट एक्टिवली सीकिंग or thinking of buying is your unsought products. Welcome. See, there is no such specific book. You can refer the notes which are uploaded on the LMS. That is enough. Okay. No more doubts? Okay. So thank you, students, for attending today's session. We'll meet in the next session. Thank you. Have a great day. Take care.